All of us are monkeys and our tails fell away. That is a quote by Charles Darwin. And it got me thinking कि हमारा mind actually चलता कैसे है? Why is it that we are plagued by overthinking and anxiety, and in the 21st century, when there is so much data that we are intaking on a daily basis, how do we actually manage it in our brain? Because I bet even you would have had the issue with positive thoughts, negative thoughts, overthinking, overthinking about the past, overthinking about the future. और ये usually हमारे दिमाग को ही नहीं, हमारे बॉडी को, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, सबको अफेक्ट करता है. एंड आई वॉच्ड अ वीडियो रिसेंटली बाय सदगुरु, and it was actually talking about manifestation, and the whole topic revolved around how you can use your mind to manifest anything you desire, craft your own destiny. But the only simple thing that we're missing is that we don't have control over our minds. And that actually got me thinking that why don't we do a solo podcast on the mind, thoughts, overthinking, manifestation and stability. तो ये podcast दो phases में divide होगा. First half we'll be talking about the mind, the thoughts, and how I've actually cracked a system. I have not mastered it, so I can't be the one who can say that this will work for everybody, but this is just my experience. And to be honest, it is a little different system. It might work for some people, it might not, but it really worked for me, and it still works for me most of the times. So I hope it helps you. So kicking off this podcast, I actually wanted to talk about कि हमारे थॉट्स से रिलेशन हम लोग को पहले ठीक करनी चाहिए, और हमारे थॉट्स को लेबल करना हमें बंद करना चाहिए एक्चुअली. बिकॉज दिस इज़ अ गुड थाट, लेट मी गिव इट इम्पॉर्टेंस. दिस इज़ अ बैड थाट, लेट मी गिव इट इम्पॉर्टेंस. और 99% ऑफ द टाइम वो हम नहीं कर पाते, बिकॉज वी लिव इन दिस वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी, एंड वी लिव इन दिस वर्ल्ड जहाँ सब या तो सही है या तो गलत है. And I don't want to get into that topic because it can get extended and controversial, and I don't want to get into that. But boiling it down to every individual, I actually want to discuss about how we can completely diminish or use it as an advantage in our brains. क्योंकि 90% of the time, जब भी हम सोचते हैं, we get identified with the thought. We believe that, okay, रील स्क्रॉल कर लिया, या इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, या ट्विटर पे कुछ देख लिया, वी आइडेंटिफाई, वी ऑटोमेटिकली पुट आवर सेल्व्स इन दोज शूज़, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट रियलाइज कि ओ शिट, ये मेरे बारे में है ही नहीं. ये इस चीज़ से मैं आइडेंटिफाई करूँगा तो उससे ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी ब्रीड होती है, बिकॉज सडनली समथिंग दैट इज़ इन थर्ड पर्सन, जो हमारे स्क्रीन पे चल रहा है या जो बाहरी ज़िंदगी में चल रहा है, suddenly becomes about us. So I think, and this was something that was actually discussed in this video by Sadhguru as well. And that is, how do you create a little distance from that thought? Creating a little distance from that thought will help you see the larger picture. And obviously, I don't want to quote his video a lot. You can watch the video. I'll link it down in the description. But I think the main experience that I want to talk about is that I personally had a lot of issues with overthinking, right? So I came up with this system which is called the thought weighted system, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दिन 24 आवर्स के लिए आपके सारे थॉट्स को स्टडी करना है डिस्टेंस से, एंड गिव ईच वन ऑफ दोज थॉट्स अ रेटिंग फ्रॉम 1 to 10. And keep 5 as the middle point. And that middle point will decide either you want to keep that thought or you want to get rid of that thought. And this is perspective, ये थोड़ा अलग perspective है, थोड़ा अलग thought process है कि look at your mind like a hard drive. Look at your mind like you're a person sitting behind a computer, and आपके हार्ड ड्राइव में जो फाइल्स, जो मेमोरी फाइल्स, जो
फाइल्स आपके ऑटोमेटिकली बैड थॉट्स या बैड थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं, उनको निकाले कैसे, या उन्हें उनसे डिस्टेंस कैसे करें. कमिंग बैक टू द थॉट वेटेड सिस्टम, अगर कोई चीज़ आपको रियली बॉदर कर रही है और सुबह से बॉदर कर रही है आपको, जहाँ जाओ उसके बारे में सोच रहे हो आप, ट्राई टू गिव दैट अ वेट बिलो 5. And I think you can break it down in such a manner कि if it's a thought that you can really manage and you can really turn it into a positive, give it like a rating like 3, 4 or even 5. If it's a thought that you really want to get rid of, put it under 1 or 2. And honestly, just sit. Even if it is the worst, most impulsive, compulsive thought, sit. Do not act upon it. कोई चीज़ मत करो, एक जगह पे बैठे रहो. आई प्रॉमिस यू, द मिनट यू जस्ट टेक अ ब्रेथ, इट विल बी अ साई ऑफ रिलीफ. You will automatically make distance from that thought and it will just go. And this essentially is a type of meditation also, and it is also a method to stay mindful. It is also a method to understanding your mind better. Because aajkal, and coming back to the monkey mind topic, is that, and I quote Sadhguru in this, and that is, monkey has two things that really define its characteristics. एक तो है imitation, कि जो बाहरी दुनिया में होगा मैं करूँगा, और second है restlessness, action, lots of action. एक जगह पे बैठे नहीं रह सकते. तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे इतना आ जाता है क्योंकि हमारी सेंसेस जो हमें इंफॉर्मेशन अपने बॉडी के अंदर प्रोसेस करने के लिए लेती है, वो ओवरड्राइव पे चल रही है. एंड द मिनट दैट किक्स इनटू ओवरड्राइव, वी डोंट रियलाइज टू स्टे इन द मोमेंट, बिकॉज हमारी जो मेमोरी है वो या तो उसे पास्ट में कनेक्ट करती है या फ्यूचर पे कनेक्ट करती है. सो व्हाट आई वुड से फॉर द थॉट वेटेड सिस्टम that any negative thought, weight it below 5. Any positive thought, if there is something that is really positive and it's resonating, आपकी energies, आपका vibe, वो resonate कर रहा है, so put it on 9 and 10 and create a positive feedback loop. Because that positive feedback loop will then give you a higher positive vibe, positive energy जो बोलते हैं. एंड ये आपके इंटरैक्शंस, आपके डेली वर्क, आपके मोटिवेशन, आपके डिसिप्लिन, आई एम सो सॉरी, सब में हेल्प करेगा. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आजकल हमारी जनरेशन पर्टिकुलरली, वी आर सो ड्रिवन टू स्ट्राइव. हमारे एवरीडे लाइफ में होप जैसी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हमें एक लेवल से दूसरे लेवल पर बहुत जल्दी पहुंचाती है. बट द मिनट होप इज़ लॉस्ट, देन इट ऑल कम्स क्रैशिंग डाउन. सो व्हाट दिस थॉट वेटेड सिस्टम ऑल्सो डज इज़ दैट एक बार एक पॉजिटिव थॉट का फीडबैक लूप हो गया तो होप ऑटोमेटिकली आने लगता है. एंड द मोर यू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव थाट्स, द मोर स्ट्रॉन्गर योर विल पावर गेट्स. And the minute your willpower gets more strong, you recognize that, you know what, I am capable, I am able to do this. और वो टाइम आपकी affirmations भी ज़्यादा काम आएगी. So if I had to boil down this topic about the mind, thoughts and overthinking, the 3 main takeaways would be, number 1, obviously, if you can, try to be mindful and create a distance from the thoughts that you don't want. Always think about it कि मेरा mind एक hard drive है और वो हार्ड ड्राइव से मुझे ये करप्टेड फाइल्स निकालने हैं, पर डिलीट बटन तभी ही आएगा व्हेन वी विल क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट. एंड अनदर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू डिस्कस कि ये आपके ऑरा, आपके एनर्जी, आपके इंटरैक्शंस को बहुत स्टेबल करेगा. बिकॉज 90% ऑफ द टाइम वी डोंट रियलाइज, बट हम कोई भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं. और वही चीज़ कई बार एंगर में निकलती है, वही चीज़ कई बार इग्नोरेंस में निकलती है, सार्काज़म में निकलती है.
जिसकी एक्चुअली वो सिचुएशन में ज़रूरत भी नहीं है. बट टू बी ऑनेस्ट, if I had to boil it down, you can very well avoid these emotions. You can really avoid these emotions because all जो processing power आपका वही negative thought में use कर रहा है ना, वही आपका translate होके real life में बाहर आ रहा है. And once that is taken care of, आपकी ज़िंदगी में automatically stability आ जाती है. आपकी life में कई बार difficult situations को deal करने की power आ जाती है. And I think if you want to know more about this, I believe you should read this book called The Power of Subconscious Mind. It's a beautiful book, you know, mind के capabilities को, mind के highs and lows को वो highlight करता है. So I will definitely link it down in the description. But moving on to the next topic. And the next topic mainly is about manifestation. And this is personally my favorite topic because I think we can agree कि हम सब के पास एक गोल है, एक विजन है, एक जगह है ज़िंदगी में जहाँ पर वो हम पहुँचना चाहते हैं. और वहाँ पहुँचने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी है which we often ignore. Because today's time, again bringing back that thing of hope, everybody says that 90% हमें एंग्जाइटी आता है क्योंकि हमारे फ्यूचर अनसर्टन है, हमें पता नहीं वो गोल कर पाएंगे कि नहीं, एंड प्रेजेंट में वो हमें डिमोटिवेट करता है. सो आई थिंक वी कैन रियली टर्न दिस अराउंड बिकॉज अगेन कोटिंग सदगुरु, योर माइंड हैज़ द पावर टू ईजिली मैनिफेस्ट एनीथिंग. The only thing is that you aren't focusing your energies in one direction consistently, without any hurdles, without any challenges that you can get faced by. And if I had to honestly put it, think of it like a sport. आप एक दिन टेनिस कोर्ट पे निकलोगे, वही पहले दिन पे आप बॉल मारना नहीं सीखोगे. It takes practice, it takes time, it takes a lot of, I think, I might be wrong, but a lot of people say that it takes 21 days to get a habit. और ये भी एक हैबिट की तरह है क्योंकि ये हैबिट जनरेट और फॉर्म होने में टाइम लगेगा. सो कमिंग बैक टू मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव इट इज़ वेरी मच in our own hands what we want our destiny to be. And I don't want to get into complex topics. I want to keep it simple. कि आज जो आप करोगे वही कल को डिफाइन करेगा, वही परसों को डिफाइन करेगा, and that will translate into your whole life. And to be honest, every situation in our life is trying to do is bring us back here to the present, because this is where we can do whatever we want to shape the future. And that is essentially what manifestation is. अलग-अलग schools of thought है. Law of assumption, law of attraction, secret book कई लोगों ने सुना होगा. और वही चीज़ को अगर हम encapsulate करने जाए affirmations के थ्रू, thoughts के थ्रू, अगर हम कुछ manifest करना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे एक्शंस के थ्रू ट्रांसलेट होती है. एंड अगेन दैट इज़ व्हाट एसेंशियली इज़ कर्मा, बट दैट अगेन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक एंड अ डिफरेंट पॉडकास्ट इन इटसेल्फ. आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन हाउ यू कैन यूज़ योर थॉट्स टू ट्रूली अफर्म एंड मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट. बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़, आई थिंक 4 मेन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. And this, I am reading this book called Shiv Shakti, which is a really beautiful book. It talks about the divine feminine and the divine masculine through Shiv and Parvati. And I don't want to take this on a religious angle also, but I really want to take the inspiration from that book and talk about कि कोई भी चीज़ या कोई भी गोल को accomplish करने के लिए 4 मेन चीज़ important है. Patience, resilience, discipline towards that goal, तो consciously सोचना और वही चीज़ को consistently करना, and faith. Because all these 3 connect your soul body and your emotional body. Emotional body being your mind, your mood,
कई सारे आपके इमोशंस या मूड जो आप डेली इमोट करते हो, and your soul body is your inner power, what helps you do something. Now we as humans are capable to do anything, I believe that at least. And अगर आपके दिमाग में कोई गोल है तो उसके रिगार्डिंग सारे थॉट्स को यही वेटेज सिस्टम के थ्रू कैटेगराइज करना सीखिए, क्योंकि ये आपको कई सारी चीज़ें सिखाएगा और ये आपको प्रेजेंट में लाएगा. एंड आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू वांट टू डेल्व डीपर इनटू दिस, देयर इज़ दिस बुक कॉल्ड द लिटिल बुक ऑफ मेडिटेशन. मैं आई थिंक ऑन द वीडियो स्क्रीन इट विल शो एंड आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. एंड इट टॉक्स अबाउट दीज मिनी हैक्स. अगर आप बिगिनर मेडिटेटर हो या एडवांस मेडिटेटर हो, दोनों में से आपको कोई भी हर्डल्स या कोई भी चैलेंजेस जो मेनली लोगों को आते हैं वो आप ऑब्वियसली ओवरकम कर सकते हो, बट ऑन अ वेरी बेस लेवल. कई लोगों का कंप्लेन ये होता है कि आई कांट सिट डाउन एंड मेडिटेट बिकॉज थॉट्स आर कमिंग. थॉट्स आर कमिंग. ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द थॉट. एंड अगेन, I am still a work in progress. This is just my experience. I am not a master at this. I don't want to condone that I am a master at this. But this was just a beautiful experience that I wanted to share with you. Because manifestation is possible. And essentially manifestation is the translation of thought to action to result. Because जितना आप सोचोगे और जितना पॉजिटिवली आप सोचोगे उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंट में एक्ट करोगे, और वो प्रेजेंट एक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा या वो गोल डिसाइड करेगा. सो डूइंग इट कंपल्सिवली इज़ नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज देन यू आर पुटिंग अप, यू माइट गेट टू दैट गोल बट चैलेंजेस काफ़ी आएंगे, हर्डल्स काफ़ी आएंगे. सो इफ़ आई हैड टू रैप अप दिस पॉडकास्ट ऑन वन पॉइंट, it would be that try it out, give me your feedback in the comments, and I would like to spark a conversation about this. I would like to discuss more about this, because I believe everybody should first, at least in this day and age where the data input is so high, हमारी attention span बहुत कम है. And I personally, from a background of, I was diagnosed with ADHD at one point. And it is all about practice and training. The thing about reels is हमारी attention span ही वो 1 minute 30 seconds की होती है या 12 seconds की होती है. And that is detrimental to us, because what we many times don't realize is that we are pushing ourselves more towards that monkey mindset. Because if you had attention and if you have that calmness of mind, that is essentially meditation. आप एक जगह में बहुत टाइम के लिए बैठ सकते हो, and then the world is your oyster. So I hope आपने कुछ सीखा होगा ये podcast से. I think this first experience was amazing for me. And if you have any thoughts, any comments, please leave them down below. I will give you all the links to all the references in this podcast. And I hope to see you again the next time with a new guest. And yeah, have a great day. Subscribe, like, comment, and I will see you